वेलकम बैक एंड द न्यूज़ इज़ आरसीबी इज़ गोइंग टू अहमदाबाद और यही हमारे पंडित ने आज पिक भी किया था आरसीबी। आरसीबी के पास फॉर्म थी और निशांत जी ने कहा था आरसीबी के पास लक है, करण शर्मा है, तो अहमदाबाद पहुँचना मैंने बनता करण है। अब शर्मा इनका नहीं कहा सामना था, होगा मैंने सिर्फ लक कहा था। और करण शर्मा इनके साथ करम शर्मा है, वो मैंने ये करण बोला शर्मा वो और अभी भी देवशीष बोल रेड्डी। रहा हूँ, करण शर्मा है। कैचेस जैसे मिस किया ना कोई भी आरसीबी बोले आरसीबी आज जीतता एग्ज़ैक्टली, नहीं। एब्सोल्युटली मैं हाँ, बोल रहा हूँ कोई अभी भी भी बोले करण करण शर्मा। शर्मा है वहाँ पे। मैच वो जीत चुकी है वो आरसीबी ने आज धमाकेदार परफॉर्मेंस की है जिसकी उम्मीद थी एक जबरदस्त एलिमिनेटर देखने का क्यों क्योंकि वो टॉप 4 टीम थी। कल हमने हाई स्कोरिंग गेम देखा, आज हमने हाई स्कोरिंग गेम देखा। देवाशीष ऐसा लग रहा था कि ये जो मैच है ना ये चिन्नास्वामी में चल रहा है। जी बिल्कुल, क्या एटमॉस्फेयर है। अभी 12-20 हो रहा है और अभी अभी शायद अभी द क्राउड स्टार्टेड लिविंग बिकॉज कोलकाता पुलिस यू नो मैच खत्म होते ही बाहर कर देते हैं सबको। तो आज वैसे में मतलब 12-15 को लास्ट ओवर बॉलिंग डाल रहे हैं हर्षल पटेल और एक भी क्राउड निकला नहीं स्टेडियम से। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द पैशन ऑफ द कोलकाता और खास करके आरसीबी और विराट कोहली। Unbelievable atmosphere और it was a thumping win for RCB. I have to accept it. एब्सोल्युटली एंड ऑफ द डे आप कहेंगे कि वो डिजर्विंग विनर थे जिस तरीके का क्रिकेट उन्होंने आज खेला। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस ज़रूर जीता, पहले बॉलिंग का फैसला लिया, हर चीज़ सही जा रही थी, लेकिन जो उनकी ताकत थी ना, उनकी बॉलिंग बहुत रन्स लीक किए। कहीं न कहीं तैयारी करके आए थे फैफ की, विराट की, मैक्सवेल की, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया। निशांत पाटीदार की वो जो इनिंग थी, मैच विनिंग वो नॉक रही, स्पेशल 100 अनकैप्ड इंडिया प्लेयर पहली बार ऑक्शन में पिक भी नहीं किया था, एज़ अ रिप्लेसमेंट आए और आज उन्होंने शतक जड़ा। वो इम्पोर्टेंट पारी जो उनको लेके गई है क्वालीफाई 2 की तरफ। और मतलब this is what IPL does ना, it suddenly gives a platform to the talent and look at the way this boy has used this talent today. Like इससे बड़ा थिएटर को इंडियन क्रिकेट में है, ईडन गार्डन से बड़ा। इफ यू आर अ क्रिकेट क्रिकेट प्लेयर, द बिगेस्ट थिएटर इन इंडिया इज ईडन गार्डन्स। इट्स लाइक लाइक जैसे एक सिंगर होता है तो उसको रॉयल एल्बर्ट में गाने का शौक होता है ना, एक इंडियन क्रिकेटर होता है उसको फुल हाउस ईडन गार्डन्स के सामने परफॉर्म करने का शौक होता है। और अगर आपका वो शौक पूरा हो जाए, दैट इज व्हाट ही डिड टुडे। एंड इफ यू like look at yesterday's match and today's match, the difference is those 20 runs, that 200 run mindset। आप वो देखिए कि दोस्त ये यहाँ पे आज भी 180 होता तो आराम से बन गया होता, 190 होता तो भी बन गया होता। इट्स जस्ट दोस 20 runs, दैट दिनेश कार्तिक कैमियो। पटदार ने तो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली ही खेली, लेकिन जो दिनेश कार्तिक ने लास्ट 5 overs दे गॉट 84 runs। That has been the difference between today's game and yesterday's game. Yesterday 188 was chased, today 208 was not chased, and exactly that phase na har kaptan use karta hai, we were 20 runs short. So today KL Rahul will say that we gave 20 runs extra. That has been the difference in both the games. जॉयदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम जॉयदीप, क्या आप अपन सुन सकते हैं? सुन पा Thank रहे हैं? you, Himaji. What an atmosphere over here. People are still here. Nobody's leaving. ये Police are showing the people out. But what atmosphere! And like Nishant was saying, this is the place to play cricket. And everybody was here. VVS Lakshman was here, and he was saying this stadium when it's full, this is a different place altogether. What buzz over here! But I was hearing what Devashish and Nishant said. I agree with all of you. But I also thought today Lucknow was let down by their fielding. They dropped Rajat Patidar on 70, they dropped Dinesh Karthik early on. So also, you cannot drop players of this caliber. Look at the catches that the RCB players took. Look at the one that Shabazz took at short fine leg. Those are pressure catches, but these are pressure games. And I really thought their fielding let them down. You cannot drop Patidar at 70 and Dinesh Karthik when he just came in and led off by KL Rahul and mid off. I know it was a tough one, but it's a tough game out here. जॉयदीप आप ग्राउंड पे ही हैं, एक क्वेश्चन और, पाटीदार की इनिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एटमॉस्फेयर तो क्रैकिंग है, वहाँ पे इलेक्ट्रीफाइंग है, लेकिन वो इनिंग स्पेशल इनिंग था। Superb. जैसे आपने कहा, he came in as a replacement, but in spite of that, how good has he been? And this is how new players. Now he's a star. And this is how I remember back in the day, people like you just coming out. Mannan Gora had a good season. Valtadi had a good season. So you come out of nowhere. Rahul Tripathi from domestic cricket.
there's another star, and he plays for MP, one of the big players. His team is still alive in the Ranji Trophy, so he'll be going and playing the knockouts of the Ranji Trophy. But he had some important games to play before that. He was brilliant because this pitch was a really good one to bat on, but he was just brilliant. Not easy when he was losing senior players around him today. Brilliant, absolutely brilliant. But I'm not surprised because I've seen him do it in domestic cricket, but to do it in this level is a different ballgame altogether. He's just gone to the next level. He's come to the next stage. एब्सोल्युटली देवाशीष दिनेश कार्तिक की बात करनी बनती है 324 रन उन्होंने बनाए हैं अभी तक जो मैच खेले हैं एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 187 आई मीन पहले नहीं आते वो फिनिशर का रोल अपना रहे हैं वहां पे आके 324 रन मार चुके हैं कम बॉल्स मिलती हैं फेस करने को और आते ही अटैक करना पड़ता है कितनी इंपॉर्टेंट वो पाले थे कितना इंपॉर्टेंट रोल है कार्तिक का इस आरसीबी में It goes to prove that Dinesh Karthik in Baki is the man of the moment क्योंकि जिस तरह से उसने फिनिश किया है पूरा आईपीएल में लगातार मैचेस आफ्टर मैचेस इस बार तो he justified his selection in the Indian team and he's too good. I mean, we could see Dinesh Karthik too in this edition of IPL. I mean, the way he made a comeback means there was a lull in his career. He was not doing well, but he did the hard work. He went back. He traveled. I was reading that he traveled some 50 kilometers to play a local club game. So that speaks volumes of Dinesh Karthik, the sacrifices he made, the hard work he put in, and it is transpired in his batting that we are seeing now in this IPL. So it has been unbelievable, and India has found a finisher in Dinesh Karthik after Mahendra Singh Dhoni left. So this has been a very, very big positive for Indian cricket. एब्सोल्युटली अभिजीत एलएसजी की बात करें तो गेंदबाजी में थोड़े रन्स लीक हुए लेकिन जयदीप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कैचेस अगर आप छोड़ेंगे तो अब आप मैचेस छोड़ेंगे वो डिफरेंस रहा आरसीबी की फील्डिंग में एलएसजी की फील्डिंग में आरसीबी ने क्या आज फील्डिंग की वो कैचेस देख लीजिए हसरंगा तो मेरे ख्याल से +20 थे आज आई थिंक हसरंगा जॉन्टी रोड की याद दिला थिंक कहीं भी जाओ बॉल पकड़ रहे थे वंडरफुल आई थिंक वही इट्स नॉट ओनली द प्ले ऑफ एवरी मैच में कैचेस पकड़ोगे तो मैचेस जीतोगे वही दिल्ली और मुंबई इंडियंस के मैच में आप दिल्ली ने कुछ इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े जिसकी बतौर से शायद आज वो प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाए सो आई थिंक ये तो एवरी मैच में ये कंसिडर है अगर आप कैचेस पकड़ोगे फील्डिंग अच्छे करोगे तो एक रन भी बहुत कभी कभी वैल्यूबल होता है आज हो सकता है आज तो थोड़ा मार्जिन से जीते लेकिन कोई मैच अगर क्लोज होता है तो वो एक रन भी काफी वैल्यूबल होता है तो आई थिंक फुल मार्क्स टू आरसीबी आई थिंक हम प्री शो में बात कर रहे थे कि they now look like to be a team that is hungry and that is dangerous. I think next match भी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट काफी डिफिकल्ट होने वाला है. I think their team in the form थोड़ा deadly combo बन गया सबका. And good thing is now if मैक्सवेल नहीं खेल रहे विराट कोहली नहीं खेल रहे फाफ नहीं खेल रहे you have पाटीदार. So I think that is डीके तो है. So I think everything is clicking now for RCB. जयदीप जयदीप हाउ गुड वाज हर्षल पटेल उनका स्पेल उनका खेलना बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की मैच में वापसी लेके आए especially compared to yesterday we saw Prasidh Krishna in the end the slower balls were not much different this person's slower ball is 25 kilometers slower than the normal ball and he can bowl different types of balls in the slower ball he's got 2-3 variations he bowls the knuckle ball he bowls the back of the hand he bowls the split finger. So he has many different balls, and the control he has with the ball, the field he's setting, short fine, and then finally almost behind short fine. So because he's not giving pace, he knows that if you drag it, it'll go fine. So he's really at the top of his game. So good to see somebody. I think he is one of the best in the world right now. He's proven that over 2 seasons, and this was a belter of a pitch. Yesterday's pitch, same pitch today, played as well. And on that, to be able to bowl 4 overs for. 28, 26, 28? 25 runs. Just 25 runs. 25. Just superb. And that also had a couple of wides. The wide went for 4, which Dinesh Karthik missed, so 5 there. So, because that's the plan. They had short third and they had point and a third man and point both on the line. So he was going around the wicket, across. Usme ek do wide nikal gaya. But his plans and his execution is just exemplary. Just so good to see because he's not a new boy. He's played 8-10 years of first class cricket.
You know, he plays in Haryana. He's done different things. He's gone away from home and plies his trade. And he's been in many teams before, here, there. But ultimately, last year, he found his mojo. And now that has got him in the Indian team. And I can't think of an Indian T20 team without him. Joyda, is निशांत, there अगर any हम method to beat आरसीबी his? की अगर बात करें, Is there any method to beat his slower ball, Joyda? Harsha Patel's slower Yeah, ball. I've spoken to a couple of batters and I keep asking them who played him, and I said, "What's the problem? I mean, slow ball is a slow ball." He says, first thing is he has no difference in his arm speed. He just absolutely, his arm speed is just as quick. And the second thing is that they say that he has different types of slower ball. So if he's bowling, the quicker one is 137. So he has a slower ball which is 119. He has a slower ball which is 110. He has a slower ball which is 125. So even in the slower balls, he has a variety of slower balls. He can vary the pace. It's almost like a good spinner. Who, if you see Ashwin 78, then he'll go 84, then he'll bring it down to 68. In test matches when he's just giving you the loop. So he's like that. So when you have a fast bowler who can bowl 135, 137, suddenly bowl 112, next ball is 121. Oh, you're ready for 112, 121 comes. Then you're ready for 112, 121, suddenly, something like a 104 comes. So he has such great pace variety. I think that's what separates him. And the main speed is that the arm speed doesn't diminish. The arm speed is as quick as the 137 ball. So you really don't see it coming. निशांत, आपके पास आती हूँ कि एलएसजी हारी ज़रूर है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने दिल बहुत जीते हैं। क्या पॉजिटिव आप देखेंगे एलएसजी में? पहली बार उतरी है आईपीएल में, हारे हैं, प्लेऑफ तक पहुँचे पहली बार आती, बट कुछ पॉजिटिव हैं जो वो आगे लेके जाएँगे। I think सबसे पहले तो the biggest positive they will have is their bowling unit. It was a young bowling unit. Mohsin Khan, Avesh, Ravi Bishnoi, all of these not as experienced names as other teams would have, but still delivering under pressure. Today may be a bad day and it can happen with any best of the teams. And मैं वापस थोड़ा सा वो लक वाली बात पे जाना चाहूंगा. वो कह रहे थे कैच छूटे हैं. मैंने बोला था कैच आरसीबी के लिए छूटेंगे. देखिए आप रजत का कैच कहाँ छूटा. उस वक्त 114 रन्स थे 14 ओवर में और वहां उसका कैच छूटा था. तो बिल्कुल ठीक टाइम पे उनका कैच भी छूट रहा है. तो आप सोच लो कि मतलब कोई लिख रहा है, इनकी स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है. वो पेन ढूंढना पड़ेगा. बिल्कुल, So, बिल्कुल, और डीके की कैच भी छूटी थी और हसरंगा अभी तक माइनस में थे फील्डिंग में, आज +20 है। हाँ, तो ये छोटी-छोटी चीजें क्रिकेट में बहुत मैटर करती हैं. So coming back to LSG, I think the way KL Rahul has marshaled his resources, he has yet again proven that he has a very calm mind and he knows how to use his resources. पहले साल इतनी कॉम्पिटिटिव लीग में जहां पे 12-12 साल से आपके पास चेन्नई सुपर किंग्स जैसे जायंट्स हो, मुंबई इंडियंस जैसे जायंट्स हो, वहां पे आके एक नई टीम बना के आपका प्लेऑफ में पहुंचना, दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट. It's not easy in that ecosystem. You go and create a new team and you are like running first year itself. Next year when LSG and Gujarat Titans will come in the tournament, no one will call them new babies. Their experience, their depth, everything will be like, अगर इस साल ये टीमें अच्छा नहीं करती तो people would have given them lot of benefit of doubt. अरे पहला साल था, they will make mistakes, they will learn from it, but they have been absolute professional units, so they can take a lot of pride out of what they have achieved as a unit, uh, especially their bowling, which a lot of people thought lacks that star power, uh, that depth of experience, but somehow they have managed to overcome. In fact, I feel that sometimes when you compare their bowling with batting, their bowling has actually been more, I would say, has helped them to come out of tough situations more than their batting. Like today, And if Nishant over here on this, huge credit to BCCI also for not having the right to match card, which is why these teams are strong. Because we remember back in the day when they had the previous new teams, they had 4 retentions and 3 right to match. So 7 into 8, 56 best players you wouldn't get. So how do the new franchises get going without best 56 players? But obviously, now without the right. And it would have been unfair. Like these teams have been bought at a very high price. Yeah, true, you cannot expect them to give that much money and then say कि अच्छा यार ये जो बचे हुए प्लेयर हैं इनमें से टीम बना लो और आ जाओ खेल लो. That is not going to happen.
Right. So I think that's the way it should be, and credit must be given to the entire ecosystem of the IPL. Like look at the True. entire image of the IPL in a world cricket. आप दो टीमें नहीं लाते हो और वो दोनों टीमें प्लेऑफ खेल रही हैं. It just not True. helps LSG, it just not helps Gujarat Titan, it helps everyone, like even people like us, because we are also, you know, in a way in this ecosystem in a small, or उस लाइन में कहीं ना कहीं हम भी सब हैं. We all benefit from the game if the game gets bigger and better. So that is such a good thing. Like when you have, like even Chennai will benefit from LSG in a way. Arey, we have 10 teams now and all 10 teams are equally competitive. It's not like कि कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि इसमें 2 tier कर दो, 5 नीचे खेलेंगी, 5 ऊपर खेलेंगी. Every team can beat every team. So that way, I think LSG it has been a very successful campaign. When tournament enters a stage like this, it could be one bad day in the office. If that catch was taken, only 170 was scored. Things could have been very different. But hindsight is the best side. They will go back to the drawing board, and you know they will feel they were near yet so far. But they will in the entire journey they will take a lot of happiness in what they have been able to create in terms of memories and achievement in the first year itself. देवाशीष, आप कुछ कहना चाहते हैं? No, I would differ slightly. There were some weird tactics from our LSG. You first of all you drop a Jason Holder. He's your gun player, and you drop him. Then you pick Evan Lewis and you send Manan Vora at number 3 when you are chasing a stiff target. These are weird tactics. I mean, Why something that Deepak is Huda was not at number 3? I something, because time and again Gautam Gambhir has proved Agreed. which is strategy and tactic. But when it comes to the crunch match like this, this was something weird strategy, because right throughout the tournament we see Deepak Huda going in at number 3. He is an informed player. You do not send him at number 3. Neither you send Evan Lewis, who you pick in as the fourth for overseas cricketer ahead of Jason Holder. So what was the strategy there? मैं उसका strategy आपको बताता हूँ. The strategy didn't work there, but their strategy, there was a method in this madness. Like in the end they lost the game. They could have won the game also. You know, they lost the game. But I think before the match we were discussing that how LSG is top heavy team. So I think yes, it has failed. The idea has failed. I think to bring down Deepak Huda, the idea was to give some more steel to the vulnerable middle order, where they have not got many runs. So they wanted someone in form to be there कि अगर ऊपर से केएल राहुल और वो आउट हो जाते हैं, अगर ऊपर से केएल राहुल और वो आउट हो जाते हैं तो फिर भी उनके पास कोई हो जिसको वो कोई ऐसा प्लेयर हो जिसको वो यूज कर सके, जिसके पास फॉर्म है और वो जाके इनिंग्स को होल्ड कर सके. आज वो नहीं हुआ, वो नहीं चला. आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक दैट इज व्हाट देयर स्ट्रैटेजी वाज, टू एटलीस्ट हम, क्योंकि आप क्विंटन डिकॉक को नीचे नहीं खिला सकते, आप केएल राहुल को नीचे नहीं खिला सकते. एक ही प्लेयर है जो 3 पे भी बैटिंग कर सकता है, 4 पे भी कर सकता है, 5 पे भी कर सकता है, और वो है दीपक हुडा. तो वहां उन्होंने वो गैम्बल किया. कभी कभी क्या होता है देवशीष, जब आपका बड़ा मैच आता है ना, तो आप ओवर थिंक भी कर जाते हो. जैसे आपका देखो, आप एक नॉर्मल क्रिकेट टूर कर रहे हो तो आप एक रूटीन तरीके से सब अपना काम करोगे. लेकिन आपको मैं बोलूंगा ना, वर्ल्ड कप फाइनल है, तो आपकी जो एक एक्साइटमेंट होगी उसमें आपकी प्रिपरेशन जो है वो कभी कभी ओवर थिंक भी हो जाएगी कि यार मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, क्योंकि एक जो डेस्परेशन है मैच जीतने की, that comes on you. And then in that process you don't look at the way you have won those games. You start looking at your shortcomings more than your strengths. Like now there are two ways of looking at it. One way is, yeah, these 3 top batters have got us bulk of runs, we will support them. And the other way of looking at it is, you know, we are too dependent on these 3, we need some steel in our middle order or late middle order. So the positive way to look at it would be कि यार हम इन तीनों को बैक करते हैं, यही तीनों ऊपर खेलेंगे. बट द नेगेटिव वे, मतलब एक आप अपनी कमजोरी को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, यार इसमें से एक को नीचे डाल देते हैं, थोड़ा हमारा बैटिंग ऑर्डर बैलेंस हो जाएगा. वो हुआ नहीं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट
clearly on their part there was strategy. It didn't work out, but like you said, आज जेसन होल्डर को नहीं खिलाया. ये कभी कभी जब आप ऐसे मैच में आ जाते हो ना, तो फिर आपको लगता है यू ओवर थिंक. वो कहते हैं ना, आपको 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल का मैच याद है इंडिया का? या जी बिल्कुल. उसका पहला ओवर याद है? या 17 runs. जहीर खान गो वाइड. वो क्या ओवर था? वो क्लासिक एग्जाम्पल था ओवर थिंकिंग का. इंडिया मैच उस पहले ओवर में हार गया था. अच्छा, कट टू 2011, सेम जहीर खान, फर्स्ट 3 overs were maiden overs. Right. First 3 overs were maiden overs. World Cup, same situation, same bowler, new ball, first ball in the hand, first ball to bowl, but experience and the understanding that it's still a match. You have to do your basics. You have to bowl in right areas. मतलब फाइनल लिख दो तो ऐसा तो नहीं ना कि बैट बड़ा हो जाता है, बॉल छोटी हो जाती है, विकेट लंबा हो जाता है. सब कुछ तो वही होता है, पर एक मेंटल जो गेम का प्रेशर होता है वो चेंज हो जाता है. एंड दैट forces you to make mistakes. And those mistakes are not just what you do on the field. They start from the thinking level. Right, absolutely. Yeah, I would like to ask, do you think Manan Vora's selection was also a bit questionable? I mean, he has not played that many matches and he was not even in that form. Do you think maybe someone else would have been a better choice than Manan Vora? नहीं, ये अगेन वी आर अगेन डिस्कसिंग द सेम प्रॉब्लम. अभिजीत, आपने उसको पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया, ठीक है ना? टुवर्ड्स द बिजनेस एंड जब आपको रियलाइज हुआ, यू रियलाइज दैट यू नो that your middle order and late middle order is not contributing, so you needed a solution for that. To make that solution, what you did was you bought Huda down, because Manan Vora is naturally a opener. आप ओपनिंग करते हैं पंजाब के लिए, और पहले भी एज एन ओपनर खेलते हैं, तो उनको नंबर 3 पे डाला. I think in that place, if they had continued with their strength and had someone like Jason Holder in the team, you would have also given them a bowling option. जितने रन मनन वोरा ने बनाए उतने होल्डर भी बना सकता था, शायद ज्यादा बनाता, शायद कम बनाता. I don't know that. Like, I don't have answer to that question. But what I'm trying to say here is that in a crucial match like this, LSG, in their team selection, there was a sense of panic, which reflected in the kind of changes they made. And that panic was like somehow मैं पढ़ रहा था कि उनका जो इन तीनों को अगर छोड़ दो, केएल राहुल को और क्विंटन डिकॉक को, और तो उनका जो बैटिंग एवरेज है वो 17 है. तो 17 का एवरेज को उन्होंने निगेट करने के लिए दे वांटेड अ बैट्समैन, बट ब्रिंगिंग इन मनन वोरा एट दिस स्टेज could have backfired, and that's what it did today. Right. जयदीप, आप ये एग्री करेंगे कि एलएसजी ने पर काफी एक्सपेरिमेंट किया है, काफी देर तक वो एक्सपेरिमेंट करते गए, आज नंबर 3 पे लेके आए. आपका नंबर 3 हुडा अच्छी बैटिंग कर रहे थे. अगर मैं कैप्टन हूँ, मैं कोच हूँ, मैं कहूंगी कि मेरा बेस्ट प्लेयर जहाँ बैटिंग करे वही करना चाहिए, उसके इर्द गिर्द आप बाकियों को रोटेट कीजिए. No, true, I agree, because Manan also opened, so they put him at 3. But I agree with Nishant that they just tried to make the batting a little deeper, as we know, except like we said, 17 average between the others. So there's a lot of pressure, and they knew this was a pressure game, decent bowling attack, so everything put together. If you see the RCB bowling attack, those 4 are just superb. And then Shahbaz and all fills in. So I think they went for it, but yeah, it was a tall ask for somebody who hasn't played at all. Jitna bhi nets kar lo, and you can't have any match simulation once the tournament has started. So it's very difficult for somebody to hit his straps. And then also he came up chasing a 200 plus. It wasn't a 160, 170 chase. It was a big chase. So yeah, it backfired. But sometimes Ashwin went at 3, got 50. Like in hindsight, like Nishant says, if the move works, nothing like it. Great, superb. Who thought about it? When it doesn't work, it falls flat on your face. That's how the game goes, I suppose. But yeah, I thought it was a tall ask for Manan to come and straight away, in such a pressure game, get going against a big total, against a very, very good attack. अभिजीत, आरसीबी पे आते हैं. जीती है आज टीम, पहुंची है अहमदाबाद, पहुंचेगी, भारत के सामने करेगी. लेकिन दोनों ही टीमों के लिए एक नया विकेट, एक नया ग्राउंड अहमदाबाद. बहुत कुछ निर्भर करेगा. आज आपको पाटीदार ने बचा लिया, अच्छी इनिंग खेली, एक स्पेशल नॉक खेली, एक मिराकल हुआ आज जिस तरह से इन्हें इनिंग खेली. सेंचुरी प्लेऑफ में पहले आरसीबी है जिन्होंने बनाई है, लेकिन आरआर का सामना करना पड़ेगा. तो बड़े खिलाड़ियों को
निखर के आना पड़ेगा, स्पेशली फैफ, कोहली, मैक्सवेल तीनों ही आज चले नहीं। आई थिंक आज रजत पटियाल थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गए LSG के लिए। वो प्रिपेयर कर रहे थे मैक्सवेल के लिए, कोहली के लिए, और पाटीदार थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गए। पर आई थिंक वही ब्यूटी रही है आरसीबी की। हमने देखा स्टार्टिंग में भी तीनों नहीं चल रहे थे, KGF, देन दिनेश कार्तिक आके काम करते थे, और आज मतलब बीच में भी पाटीदार ने कुछ नॉक अच्छे किए थे, लुमरा ने अच्छे किए थे। आई थिंक वो ब्यूटी रहा है। हु नोज अगर अगले मैच में भी अगर कोई ये तीनों में से नहीं चलता है, पाटीदार में नहीं चलता है, शायद लुमरा खेल जाए। ऐसा मैं देखा है। रिमेम्बर किंग्स 11 पंजाब 2014 में मैक्सवेल और डेविड मिलर वाज इन ट्रेमेंडस फॉर्म, लेकिन शायद फाइनल में हार गए थे, लेकिन वृद्धिमान से अच्छा खेल गए थे। तो ये सब चीजें इट इज गुड थिंग फॉर RCB that ये ठीक हो रहा है, and I think it motivates obviously the seasoned player like Kohli, Maxwell and Faf as well. But I think जो बाकी भी जो प्लेयर्स है जिन्होंने शायद अपना बैटिंग में रोल नहीं किया है, आई थिंक वो भी कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग हैपनिंग फॉर RCB, and I think अगले मैच में they probably hot favorite for the match. एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट, फॉर्म उनके पास आ चुकी है और जिस तरह से एज अ टीम अब खेल रहे हैं, डेफिनेटली डेंजरस साइड कह सकते हैं, और यू नेवर नो कि फाइनल से भी देखने को मिले। लेकिन जाते जाते फटाफट से अपनी पिक बताते हैं। अभिजीत, आपसे शुरू करते हैं। आपकी पिक परसों के मैच के लिए अगेंस्ट RCB RCB। देवजीत? RCB because they has the momentum now. टी-शर्ट गुजरात टाइटंस की। अरे टीम भाई साहब, RCB। गुजरात टाइटंस का मैच होगा तो गुजरात फाइनल में गुजरात टाइटंस ही पहनेगा। Oh, sorry. I'm sorry. जयदीप, योर पिक? Yeah, I have to go with RCB as well. I think I've been saying all along, ball is rolling for them. Everything has been happening for them. I feel they're in a very good space now. Today the body language, the feel, everything was on song. And in spite of Faf getting out early, Virat getting 30 odd, even then Patida showed up today. Somebody else showing up. They are all coming to the party at the right time. I think it's going to be RCB. RCB, Nishant? I think, I always believe that when you get into a tournament in a situation like this, when you are dependent on others, and somehow, जैसे वो कहते हैं ना, गिरते पड़ते पहुंच गए, those teams become very dangerous. आप 92 पाकिस्तान, 99 ऑस्ट्रेलिया, एक सीजन मुंबई इंडियंस जब जीती थी, आई थिंक दे हैड टू विन 8 गेम्स इन अ रो to win the finals, and they did that. Like one game they would have been out of the tournament, and they won 8 games in a row. I think that was their I don't remember which title was their first or second, but some one year it happened. जिसमें एक मैच में फॉकनर ने रन बनाए थे, मुझे कुछ याद आ रहा है, नहीं दैट वाज आरआर। बट कमिंग बैक टू दिस, आई थिंक इन दिस टूर्नामेंट RCB इज अ टीम लाइक दिस। आप सोचो, आज भी वो जो किसी ने, हम सुबह बात कर रहे थे मैक्सवेल की होगा, विराट की होगा, और चेंजेस LSG ने भी किए, उन्होंने भी आप सोचिए, यही मनन वोरा अगर 100 कर देता तो हम कहते वाओ व्हाट अ चेंज, लेकिन वहां रजत ने रन किए। इसका मतलब क्या है कि एक एक्स फैक्टर है उस टीम के साथ इस वक्त, और वो एक्स फैक्टर से ना एक ऐसा सेल्फ बिलीव आ जाता है कि हम कहीं से भी जीत सकते हैं, हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं, और वो टीमें फिर बहुत डेंजरस हो जाती हैं। तो आई विल आल्सो गो विद RCB। यस, एब्सोल्युटली। चलिए, सारे जो पैनलिस्ट है वो RCB के साथ जा रहा है। परसों ये मुकाबला होगा, अहमदाबाद में खेला जाएगा। आप क्या आरआर का आरआर? नाम ले दो, आप अपना पिक तो बता दो। नहीं, मैं तो RCB मोमेंटम के साथ, मेरे को भाई दोस्ती निभानी है, टीम अच्छी खेल रही है RCB की, वेदा नाराज हो जाएगी, मैं RCB के साथ ही जाऊंगी। और मुझे फिर भी लग रहा है, मैं भी जयदीप और आप सब लोगों से सहमत करती हूँ कि मोमेंटम मैं उनके पास है, लक और उनके मैं पास है। और रीमा जी, मैं करण शर्मा का सपोर्टर हूँ। देखो, कान यहाँ से पकड़ो या करण यहाँ शर्मा से तो अगले पकड़ना, साल कहानी RCB में ही है वो। तो RCB ये का बल्ला गजब है, साढ़े किसी एक प्लेयर 5 बार चैंपियन हो रहा है तीन टीम के साथ, अनबिलीवेबल। मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स 2 बार, और अभी RCB। ये कैसा हो सकता है? देखो ये देखिए, सब टीम अपनी लड़ाई लड़ रही है। चैंपियन हुआ नहीं है, खाली एलिमिनेटर जीता है। हाँ, ये बात सही है। डोंट पुट द एलिमिनेटर हॉर्स जीता है। बिफोर द कार्ट। जॉयदा, जिस तरह अगर से वो खेल रहे हैं, जिस RCB तरह जीत से जाएगा तो लाते हैं उसको RCB रिटेन के कर साथ, लेगा। वो जाएगा टीम फाइनल में। टीम तो गुजरात है, आपके पास टी-शर्ट जिसका है, टीम तो वो है, वो चुपचाप तो बैठा हुआ ठीक है। है, आजा वो भाई, तो ठीक कौन है। कौन वो बोल रहे हैं हमारा पास 11 प्लेयर भी है और देवाशीष का टी-शर्ट भी है।
That's the main 12th. चलिए कोलकाता में तो आज बड़ा मजा है मैच देखने को। अब अगला मैच मिलेंगे अहमदाबाद से पहले आरआर वर्सेस आरसीबी। परसों वो मैच खेला जाएगा। मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड गुड नाइट। Right. Good night. Good night.